ये तो कुछ अलग ही बोल दिया आपने। और इंग्लैंड के साथ आपका प्लान क्या होगा? प्लान क्या होगा आपका? अरे प्लान तो एकदम सिंपल है। चाय पे बुलाएंगे और रॉयल वाले एटीट्यूड दिखाने वालों को I'll take care of him. Good evening, ladies and gentlemen, wherever you are in the world, whatever you are doing, stop and take notice, because tonight, history is knocking again. And here's the man, Voldemar Morata, walking out for England, focused, expressionless. England taking a good look around the stadium here, just soaking in the atmosphere. और गुरु, नाप लो जितना नापना है घास की लंबाई, अंत में वैसे भी होना है इंग्लैंड की धुलाई। Stage is set. The players have taken to the field, and there, already working himself into rhythm, our very own Behen Stokes. गुरु अश्लीलता नहीं, लाइव टीवी No, I है। said Behen Stokes. अरे बहन स्टोक्स हो या बहन बिग बी के टैक्टिक्स के सामने सब हो जाएगा। एक बहुत बड़ा जोक। India may have Big B on the touchline, but England have one of the most unpredictable figures of all as their manager, Mr. Bean. अरे मुझे तो ये बीन से ज्यादा राजमा लग रहा है। Whatever pleases you, Paji, but now we have the lineups here, and this is how India are looking. Kali in goal, Chetri, Boy and Thala at the back, Lagan and Babiji in midfield, Medinho and Bagatuso wide, King in support, and Mbapu up top. गुरु ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं, भारत की पहचान है। हर खिलाड़ी में जुनून, हर कदम में एक तूफान है। और इंग्लैंड का लाइनअप भी आ गया है। वोल्डे मोराटा गोल में, डिफेंस में हरिपुत्तर, टट्टी, रानी और न्यूटन, मिडफील्ड में एड हिरन, रोनी, बेकहम, आगे चर्चिलिनी, बेन स्टोक और केपी। The lineups are confirmed, the anticipation is complete. All that remains now is drama. The flames of 57, the scars of Jallianwala Bagh, the march to Dandi, the cry of quit India. History has walked this path before, and tonight it arrives on a football pitch. ये तकरार नहीं, सदियों का जमा हिसाब है। जहां कहानी लिखी गई थी, आज उसका देना जवाब है। स्वागत है एक बार फिर मोदिनो स्टेडियम एम्बापू नगर में, जहां भारत इतिहास दोहराने नहीं, याद दिलाने आए हैं। Well, Baji, both sides are glittering with stars tonight. Icons, legends, names that echo beyond the game. But this is something else. India have the passion, the fire, the weight of a billion dreams. But can they rise when history whispers their name again? Or will England reclaim the moment this time? एसीबी भाई, मुकाबला शुरू किया जाए। And here we go. Mbapu gets us underway. Rolls it to King. King slips into Babiji. Babiji, Silky, finds Bagatuso. Bagatuso moving forward. Oh, that's cheeky. A flick. He dances and threads it through. Thala with the vision. Lays it off. Back to King. King lifts his head. Spots the run. Mbapu is in. And Mbapu! एम्बापू ने छोड़ा था अंगार, पर आज तो टट्टी भी बन गया दीवार। Heroic defending by Andrew Tati. That was goal bound. That was destined for the net. But England survived just about. On the ball, carrying it forward, finds KP. KP with a lovely through ball to Rooney. Rooney's in space, and Rooney! ये तो रूनी नहीं, अनहोनी निकला। ये है इंग्लैंड का गोट। Boy, looking for options. Oh, Beckham nicks it off him. Falls to Behen Stokes. Brilliant lob through to KP. KP takes it first time. What a save by Kali. केपी का ये शॉट इंग्लैंड को शिखर तक ले जा सकता था, पर बिमल वाली सफाई नहीं थी। ये मौका दाग बन के रह गया। Indeed, an incredible save there. A reaction time of just 0.33 seconds there. गुरु इतने में तो प्रीतम भाई की गेम ही खत्म हो जाती है। What do you mean? कुछ नहीं गुरु, मैच देखो। रानी कॉर्नर के लिए तैयार हो रही है। All right, Baji. Now, Queen, looking for options here. She swings it in. Kali rises. Oh, that's a solid clearance. Ball's in the air, dropping dangerously, but King is there, looking to get a hold of it, and he wins the battle against Queen for the ball. And now King, driving forward, he finds Mbapu. Mbapu accelerates, space opening up, threads it through, Bagatuso's in, Bagatuso through on goal, and Bagatuso! Goal! Bagatuso has arrived, and India are on the lead. और गुरु, इनकलाब जिंदाबाद, इंग्लैंड बर्बाद। गोली ऐसी चली कि गोली संभाल ना पाया, जैसे भगत के जुनून के आगे कोई झुक ना पाया। England are shaken. Bean is livid on the sidelines, clearly not impressed. What's his move now? गुरु मूव लगाए या बोली नहीं बचेगा, चर्चिलिनी। Hang on, something's happening here. Bean is gesturing someone. It's Harry अरे Potter. हरिपुत्तर, He's saying something. अब ये Who क्या हो thought रहा है भाई? unsure? Now he insists, points across, and that's Stephen अबे Hawking. What is going ये on? क्या उखाड़ लेगा? Wait, what's he doing? अबे Is he actually? रोको इसे कोई। Stephen Walking. Hold on! It looks like KP's coming on! हाथ से But who's coming on? गुरु Don't tell me! कर दिया भाई, कर दिया जादू। और हरिपुत्तर
किसी को समझ नहीं आएगा। पुत्र ने बोला खुल जा सिमसिम, लग गया लंगरे पे इंजन। Amidst the chaos, we are back underway. And here we go again. England kick off through Ben Stokes, played short to Ed Heron. Heron carries it forward, finds Stephen Walking. Walking now driving with intent. Stokes wants it. Churchill-Edie's calling for it. He ignores them both. Walking guides past one, skips past another, and Walking! What a goal! Stephen Walking has just changed the equation with this equaliser. The scores are level. और गुरु, आइलैंड हो या इंग्लैंड, गोल हो या गोल, जब ये चल पड़ता है पुत्र, सब हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। Spot on, Pardew. One moment of brilliance, and England are roaring again. कान पे मत चिल्ला गुरु, पिक्चर अभी बाकी है। गुरु, बस एक बात समझ नहीं आई, पुत्र ने जादू तो कर दिया, पर एसीपी क्यों चुप रहा? दाल में कुछ Oh no, wait! Beckham snatches it off by, falls to Bayhan Stokes. He's driving forward with pace, and Bayhan! अरे बाप रे! Oh, what a save by Kali! डिफेंस हो जाएगा पार, फिर भी नहीं मचेगा हाहाकार, क्योंकि आगे हिमालय पर्वत खड़ा है तैयार। Now England have a corner here. Andrew Tutty standing over it, waiting patiently, looking for options, calling a man short. Beckham comes across, receives it neatly from Tutty. Now Beckham driving forward. Oh, what a nutmeg on Begatuso! ये नहीं करना था गुरु। Now Harry Potter involved. Potter returns it to Beckham. Beckham scans the box. Ed Hiran is calling for it. The pass comes in, and Hiran! Goal! Ed Hiran gives England the lead. He took the pressure, divided the defence, and multiplied the chaos. और गुरु, ये सिर्फ एक गोल नहीं, ये है इंग्लैंड के लिए उम्मीद की किरण, और उस किरण को जगाने वाला एड हिरन। अब कौन रोकेगा इस हिरन को? अबे कैमरामैन मरवाएगा क्या? That was a close one, but England have flipped the script completely. India need a response here, and they need it quickly. अभी भारत को कुछ तो करना पड़ेगा। India trying to settle back into और the लो rhythm गुरु, here. ये चाय भी ठंडी हो गई। Now Bigay Hoff plays it forward to Babiji. Babiji trying to work the angle here. Slips it into Boy, but Ed Hiran intercepts with a brilliant tackle. Now Mbapu picks it up. एड हिरन पीछे पड़ गया है गुरु, इंडिया को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा। वापस से बहुत थ्री, ये फिर से आ गया, जबरदस्त टैकल और बॉल मैदान के बाहर। I see fire in Ed Hiran. Look at him celebrate. And अरे all. देखो कैसे देख रहा है, भाई का दिमाग फ्राई हो गया, लगता है आना ही पड़ेगा भाई को अपनी पे। For India here. Tala scanning the pitch for options. King wants it short, but Ed Hiran's with him. Tala throws it in. Oh, they tricked England. Babiji receives it. Boy wants it. She finds him perfectly. Boy charging forward now. Oh! अरे हिरन की लेली खड़े खड़े। Boy still going. And Boy! Oh! Boy has just equalised, and the big boss has just taken over the house once again. गुरु, दिन में तेरे नाम, रात में इंग्लैंड का काम तमाम। हिरन को लगाना पड़ेगा सिर पे बाम, क्योंकि धुलाई हुआ है थाम थाम। And Boy may have just produced one of the goals of the tournament. The scores are level again, 2-2, and suddenly all the pressure गुरु, swings right. कोई आ